array, why do we need array, okay, all these things, whatever the things, because this topic we haven't covered in our lecture time. So that is why first for 30 to 45 minutes I'm going to cover the entire thing about, okay, how to basically create an array, what is an array in Java, and all those things. Okay, so let's start our today's this session. So in this session, we are going to first learn about what is an array, why we are using array, what are the advantages and limitations, and how Java programming language overcome these limitations. Then how to declare an array, how we are going to construct an array, what are the different types of array, like your single dimensional, multi-dimensional, all these things we are going to cover in this session. So let's start with the first thing is what is an array. So if somebody is going to ask you about, okay, what is an array, not only in the with respect to your Java programming language or in any programming language, an array is basically a concept. So in this, what is the meaning of an array? So an array is a collection of elements of similar data types. So it means that whatever the values you are assigning, okay, or you are storing in that array, always remember that all the values or all the values, whatever the values you are storing in that particular array should belong to a same data type. It's not like that we have created an array. Let's assume this is an array, and in this array we are storing 2, we are storing 2.5, we are storing char, something like some string value like that. No, if we have created an array of integer data types, so we can store only integer data type values. We cannot store floating type values or your double type values or your any other different types of values. Okay, so this is very important and always keeps in your mind. Now, the second thing is that, so what we have learned so far is that an array is a collection of elements. So here, right now, what we are doing, if I'm going to ask you about, okay, please store some value in a variable. So what you are doing, you are just create, you use some data type, whatever the data type you want to use for that particular problem. You write down the variable of that name, of that whatever the variable name you want to pick, and you just directly assign this value. But if I'm going to ask you about, okay, for this variable, just by using the same variable name, can I access multiple values? So you will directly say that no, it is not possible. But it is possible with the help of your array. So using with the help of your array, what we are doing, we are performing the collection of elements, okay, of similar data type. Now the second point is the size of an array is fixed. Okay, so your array size is not dynamic in nature. You are not keeps on changing the size of an array. So once the size of an array is fixed, like for that particular size, like for example, you can store only 5 elements. So you can not change the size of an means an array later on. So it is not possible in Java. So we will see that how we are going to achieve. So using with the concept of collections, we are able to achieve this thing, but right now we are not at all focusing on the collection part. Right now we are focusing upon this a very simple concept, that is your array. Now the size of an array must be specified by an integer value. So always remember that whenever we are storing, so whatever the size of a value we want to store, so the size of the array should belong to an integer value. Even though you can go for your char, byte, long, byte, char, sorry. So all these are what your data type you can use, but you can see over there all these data type, why we are using byte or short, because integer is having the higher range than what these values. So that is why all these values are going to be considered. But if somebody is going to say me that, okay, can we store the value long? No, you cannot create. Okay, you cannot store long values. You cannot store double values. Okay, I'm this here I'm talking about the indexing part. Here I'm not talking about the value part. In value part, whatever the data you want to store, it's up to you. I'm not talking about that data type. I'm talking about the indexing part, right? So for the indexing part, your size of the array must be should be specified by an integer value. So I will give you one example. Through example, you will understand that what I mean to say.
Now, the fourth point is the first element of an array always start with 0. This is very important, and I have seen like sometimes the student get confused because according to their logic, everything is fine, their code is working fine, no issue at all, but they are not getting the exact output. So the reason is that they always start their indexing of an array from 1. They assume that, okay, if we have an array of size 5, so they will say that, okay, 1, 2, 3, 4, 5. But in reality, in your Java, the array will start from 0. Okay. So if somebody will ask you, okay, the size of an array is 5. So you will say that the indexing will always start from 0. So the how many, what are the indexing of this array? The indexing will be 0, 1, 2, 3, 4 only. Okay. So it will be always less than 5. Why? Because we are starting from 0. So this is very important. Okay. An element of an array is accessed by its respective index. So if we want to access that particular array, so what we generally do, we directly access with the help of their indexing value. So that is a very important concept of your array, is that if you want to access some element of an array, directly go through the indexing. Okay, I want second element of an array. What I will do, I will find out A1. So A1 will tell me about second element. Oh, got it? Because first element is going to be tell us about by which indexer, your 0 indexer, right? This is all about this. Now the Java array can be used as a stack. So where we can use arrays? So can we use array anywhere, or is there any restriction? Okay. So what are the uses of an array? So arrays can be used in your static field. So if you want to use in static methods where you are basically passing the as an method parameter, you can use it. You can use in your static field as well as you can use in your local variable. Okay, so it's up to you whether you want to use an array. Okay. Now, so let's start with an array. How basically we are going to visualize an array. Okay, so it's a very easy representation. So right now I'm just giving you an idea about single dimensional array. Single dimensional is like one dimensional. Okay, 1D array. So this is a 1D array going in a single direction. Okay, like in a one directional we are going or keeps on extending that array. This is known as your 1D array. So here what I have done, I have created an array. So this is just an visualization. Always try to understand. Okay. So here what we are going to do, if we are going to create an array of size 6, right? So always remember my first index is what? 0. And my last index will be what? 5. Why? Because 0, 1, 2, 3, 4, 5. So I'm total, if you will see over there, the size of an array is 6 because I'm starting from 0. So this is very important. And in index 0, what value I have stored? Whatever the data type my array is. For example, here my data type is integer, so I am storing only integer data type values. So I cannot store over here 703.5. I will get an error. Why? Because I have created an array of integer data type. So why you are keeps on storing the value of your float or double point data type values? So it is not valid in Java. Okay. And the second point which I have mentioned over there is that the size of an array must be specified by an int value, What does it mean? That I am talking about over there, I am talking about the size of an array. Here the size of an array is what? 6. So you cannot make the size of an array as 6.5. It is invalid in Java. Always remember, you cannot make the size of an array 6.5, 6.56 like that. It should be always in the form of integer. Right now here my size of an array is what? Your integer value, that is only 6. Right? Now the first question that comes to your mind. So whenever you are learning any new topic, whatever the topic you are learning, like packages, class, object. So first thing always that question that comes to your mind is why we are using that thing. Okay. So similarly, if we are going to talk about array, so the first question that comes to your mind is why we are using array. Is there a way that without an array we can solve that problems? Or then what is the need of an array? So this is just an example. Okay.
I'm just giving you one example through which you will learn that, okay, why array is more functional, even though there are many other applications of an array too. But still, I just give you a one simple example so that you will understand, okay, what is the need of an array. So let's assume if I'm going to give you one question, okay, and in this question, I'm asking you is that just store one integer value. So how you will store? You will write int x is equals to 1. So this is how you will store a value. So right now, whatever the question we are giving you, how you are storing a value? By declaring or initializing some variable, right? Now similarly, if I'm going to ask you about, okay, can you please create two integer value? So this is a different program, okay? So how you are going to do it? Again, you are going to write int x1 is equals to 1, x2 is equals to 2. So this is how you are going to create. Let's assume if I'm going to ask you about, okay, just create 100 integer value, then how you are going to create? You required how many variables? 1000 variables are required. Always remember, what if we required 1 lakh or 10,000 values we want to store? Then in that scenario, 10,000 variables are required. So are we going to use that much number of variables and see how much complex it will become? Okay. So in order to sort out this issue, because you can see over there, the readability of the code becomes down. Because of 1000 values, 1000 variables are required. For 10,000, 10,000 variables are required. And suppose you want to make some changes in some variables. So first of all, you have to find out, okay, which variable is storing which value, what is the meaning of this variable, and so on like that. So it becomes so complex. Okay, so the readability of your code becomes down. So that is why, in order to sort out this issue, what they have done, they have proposed, and they have basically arrays already there in your C as well as C++ programming language. So because they know that, okay, there is many application of array, so they have also incorporated this concept in Java programming language too, and the concept is known as an array. Okay, so in array, see, in Java, what is this solution? See, in a single line, we are able to create what? An entire 1000 values by using index. So here what we have done, we have created an array. I will tell you about how to create an array, but here the meaning, the motive which I just want to tell you over there is, so this is how basically in a single line, we have created a 1000 size array. Okay, it's array which is holding how many values? 1000 values. Okay, so now see, in a single line I have created, so it's become quite easier for me to basically call those, whatever the modification I want, so whatever the operation I want to perform, so it's becomes quite easier for me. So by using index, we can access all the values of array. So we use an indexer. Okay, like I told you that from in an array, always indexer will start from 0. Okay, like that. So first of all, later on we will tell that I will tell you about that how we are going to create an array on all those things. Right now you should know that why to use an array. So if in any interview, if somebody is going to ask you like what is the application of array, why we are creating an array, so you can give this example. And if you want to create some more examples, you build your own examples in your way. Okay, like that. So now what are the advantages and limitations of an array? So till now, I'm just considering like for this lecture, if we are talking about that, what are the advantages and limitation of an array? So the first advantage is, as you already know, that an array is an indexed element of fixed number of homogeneous data element. So this is just a definition of an array. Okay, like you are storing indexed element, okay, with a fixed number of homogeneous. Homogeneous means same data type. Heterogeneous means different data type. So here we are storing only homogeneous data type. Means we can, if we have created an array of integer data type, so we can store only integer data type value, right? Okay. So now what is the advantage of an array? So there are many advantages, out of which one of the most common advantage of an array is that the main advantage of array is that we can represent multiple values under the same name. Like I have shown you in this example, like I have used is only single variable, and using the single variable, I will be able to store all these values. Okay. So how we are basically creating these values, how we are accessing these values, all these things we are going to discuss just after this slide. Now,
Now, what are the limitations? If somebody is going to ask you, what are the limitations? Do we have only advantages, or do we have some limitations of an array? So let's talk about this thing. So once we have created an array, there is no chance of increasing and decreasing the size. So once you have created an array of size 1000, okay, now I have created a size of an array. So after that, it's not like that I will say that, okay, no, because I required only 500 numbers, so I will make the size as 500. No, it is not possible. Okay, if you have allocated, see how much, suppose for your batch, let's assume I have created an array of 1000, but later on I came to know about, okay, for your batch you have only 30 students or 32 students. So what will happen in that scenario? All this memory, whatever the memory I have allocated, I am just wasting that much amount of memory. Okay, so that is a disadvantage. So whenever you are creating an array, so always keeps in your mind is that, okay, what should I make the size of an array? It's not like that you will make the size of an array as infinity, like not infinity means like 10,000, 1 lakh, but in reality you are storing only 5 values. So if you are storing 5 values, make an array of 5, size 5. Okay, so that is the limitations. Okay, so always try to remember that whenever you are going to create an array, always find out, okay, what should be the size of an array. Otherwise you are going to waste a lot of memory. Wastage of memory is there. Okay, hence memory point of view, array is not recommended. Okay, so in Java they don't recommend the memory point of view array, so we are going to discuss it about. So an array can hold homogeneous data type. So this is also one disadvantage of an array, is that you cannot store, like I have given you in an example, is that we cannot store 703.5. We cannot store over there, for example, some string, like some name, like for example, Ray. Right? So we cannot store like this. So it is not possible in Java. So you can store only homogeneous. If it is double, then you will be able to store only double data type values. If you are storing integer, then you can store only integer data type values and all. But right? So this is all about your array. Now, so these are the disadvantages, but these disadvantages, because Java developer, Java team, they already know about, okay, these are the disadvantages. Then how you are going to tackle these situations? If you are creating some objects, some projects, because in projects we sometimes we don't know what should be the size, what should be the your homogeneous or heterogeneous, how you are going to find out. So that is why in Java they have proposed one more topic, that is known as your collection. So using collection, we are able to resolve all these issues, whatever the issues I have told you about this in your inside your limitation topic. Okay, right? Now let's start, and we are going to start with our implementation part. That suppose in any program, if I'm going to ask you about, okay, just declare an array. So the first question that comes into your mind is how I am going to declare an array, because I don't know the syntax. Okay, so I have to follow the syntax, because whatever the thing I am writing in Java programming language, I have to follow syntax. Syntax is nothing but, you can call it as a rules. You have to follow that particular rules or for that particular syntax. So what is the syntax of an array? So for a single dimensional array, the syntax, these three are your syntax. Okay, so these three are what your syntax of an array. So that is why in most of the students generally they ask me like, sir, in some of the book I have seen like public static void main, inside your public static void main string, then we create bracket, then we will write args. They generally ask me, sir, you are writing this bracket braces over here, array braces over here, but some in some book they are writing braces over there. Why we are not getting a compile time error? So the reason is, in Java programming language, the way you can represent an array are basically there are multiple types out of which these three are common types.
So see, if you want to represent an array in your Java programming language, so you can see I have created an array of integer data type. I have created an array of integer data type. So all these three are same. Okay, these three are same. No difference at all. Now it's up to you which representation you want, but it is recommended. Okay, I'm not saying that okay you should also follow this whatever the thing I'm following right now. Okay, so it is recommended to follow your first type, that is this one. Whenever you are creating an array, just write down integer, then write down these braces. These braces will tell us about what we have created an array, and then you will write the variable name. Okay, right, this thing. Similarly, if you want to create, so this is means only one dimensional array. If I'm going to ask you about, okay, please create an array of two-dimensional array, means an array will have rows as well as columns, then you will say that, okay, this is known as your two-dimensional array. In two-dimensional array, just write down two times you have to write these braces. So it will tell us about, okay, now I have created two-dimensional array, right? So you can use any notation, whatever the notation where you are feeling comfortable. But if you are new to array, so I will advise you to, and I will recommend you to go for first notation, that is this one. Right, like in public static void main string args, we are also following this first syntax, that is this one. It is recommended. While I'm not saying that you will get different answer, all the representation are same. Okay, right, this thing. Now similarly, if you want to represent three-dimensional array, then how can you represent? So I have to write three brackets over there. If I'm going to create five-dimensional array, five brackets will be there, right, so on. But in most of the problems, you will get the questions related to single dimensional as well as two-dimensional array. But if you are going to create your project, and your project you are storing different values, okay, like different dimensions you are considering, then in that scenario you always go for multi-dimensional array. So it depends upon your application, how what dimension you want. If it is simple, then go for single dimension. Why to waste a lot of memory, right? This thing. So similarly, if you want to create an array, okay, like what we generally do, if I'm going to write int a comma b like this, so what does it mean? I have created two variable of integer data type. So it is possible in Java. Similarly, if I want to create an array of two variables, okay, so these two variables are different to each other, they are not same, okay, they are different, but they are what, an array of integer data type. Of integer data type means they can store only integer data type values. If I am going to write double like this, then I have created two arrays a and b of which data type? Your double data type. It means they are storing which values? Your double type values. Got it? So this is the way basically you can represent. So similarly, as I told you that this is the recommended one, but I can tell you about, okay, if you are going for double, even though it will give you more complex thing, but it is advisable that out of these four, if I'm going to ask you which is not valid in Java, then it is invalid in Java, the fourth one. Okay, but I will advise you right now, because you are most of you are beginner in this, in your Java. Whenever we are means an array means most of you are not having an idea about array in Java. So I will recommend you to please try to use this thing, this syntax notation. Okay, whatever the thing I have already recommended you. Don't go for other thing. Otherwise, it is going to create a lot of complexity for you. Okay, later on you can search it out that, okay, why this thing is valid, why this thing is valid, why this thing is invalid. Okay, so note, if you want to specify the dimension before the variable, it is possible only for the first variable. Only for the first variable it is valid, that is why this statement is valid. But for the second case, again, if you are going to write this, then you will get an error. That is why we are getting a compile time error. So right now, what you have learned so far, what is an array? Why do we need an array? What are the advantages? What are the limitations of an array? And how we are going to declare an array? But are we creating, what is the size of an array? We are not talking about what is the size of an array. If in any program, if I'm going to write int a,
And if I'm going to write system.out.println, if I'm going to print the value of a, and suppose this a is a local variable, then what will happen? You already know that for local variables, there are no default values. Hence, you will get an error. Similarly, here also, if I'm going to call an array, then what will happen? Again, I will get an error. Why? Because right now I don't know what is the size of an array. So how to create the size of an array? So we are going to talk about here in the array construction part. So how to create an array? So I think all of you are now having an idea about what do you mean by new keyword. So new keyword will do what? It will help us to create an object, and it will allocate some memory in our heap storage. This is all you know. Whenever we are creating an object, so when we are using this variable. Similarly, in the case of array2, whenever you are creating, okay, whenever you want to initialize the size of an array, you have to create an object of an array. So see how to create an object of an array. So I have declared an array. Now I want to initialize them some size. So where I should store the size of an array? I required some memory. So that is why I used this new keyword. This new keyword of which object? Your integer array, right? So whenever you are going to write 3, it means the size of an array is what? 3. Right? Indexing will start from 0, 1, 2, right? So this is all about your array. How you are going. So in today's lab, if we are going to ask you about, okay, you have to create an array of size 3. So how you are going to create an array of size 3 of integer data type 2? So first of all, you will write int. Then because we want to create single dimensional array, then whatever the variable you want to take, then in equal to part, just mention that new keyword. This is very important keyword. Okay. And then because we are creating an object of an array of integer data type array, so that is why you have to write, and it will allocate the size of 3 inside my memory. Right? This is very important. Now if in your today's lab problem, if you are going to write this syntax, how? Int a, that is okay. Till now everything is fine, that you have declared an array of integer data type. What is the size of an array? You haven't declared what is the size of an array. So if you are not going to mention the size of an array, then you will always get a compile time error. Always remember. So that is why it is always you should always try to use mention the size of an array. It means I have allocated the size of an array of size 3, and which this array size, this array address I am storing where? In my this variable. This you call it as a reference variable, right? Now, so one more thing in your array is that, as I have already mentioned, that it is legal to have a size array of size 0. Okay, so in Java, it is valid. If you want to create a size of an array of size 0, it is valid in Java. Okay, but here you can see over there, you cannot enter negative numbers. Always remember. So if you are going to create an array, right now what I have done, I have created an array, and what is the size of an array? -6. So you cannot make the size of an array as negative. So in that scenario, you will get an error that is negative runtime exception. So during runtime, you will get this error. Why? Because objects we are always create during runtime. Now what are the valid your array size data types in your Java programming language? Byte, short, int, and char. So these are the only valid data types that are there in your Java programming language. If you are going to use some other data types, you will get an error. For example, if I'm going to write int, right, a is equals to new int 5.5, I will get an error. If I'm going to write 5L, it means it is long. Okay, 5L, again I will get an error. If I'm going to pass some string, I will get an error. Always try to remember. So what values I can assign? I can assign, because why byte, short? Because these are a subset of your integer. Okay,
So we can store if integer is valid, so automatically byte, short, and character are valid in Java programming like that. So if I'm going to ask you about, okay, what are the find out the valid array statement. So in the first statement, I have created an array and the size of an array is what? A, right? In the second case, what I have done, I have used C, make it B, byte B is equals to 10. And now I want to initialize the size of an array as what you B, right? This one. Similarly, I have created an array of this size 10L, and now I have created a size of an array as 10.5. So according to you, out of these four, which one is valid? Yes, anyone? What are the valid statements? First one is valid, sir. First one is valid, yes. What about second one? The byte one is valid, yes, sir. It's valid. And then Sorry, your third voice is one. not. Sir, Yes? is Can second you hear me? valid. The byte one is valid, sir. Yeah, And byte one is also valid. What about this the one? long and float are not valid. Fourth Yeah. and fifth are not. Okay, yeah, great. Right. So I hope that you will understand that why these two are invalid, because we can consider only byte, short, int char. Or please don't get confused. I think student, please don't get confused कि क्या हम ये नहीं क्या डबल array बना ही नहीं सकते. यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? What we are doing whenever we are making int, तो हम यहाँ पर integer values की बात कर रहे हैं. यहाँ पर ये जो वैल्यू जो साइज की बात कर रहे हैं, ये हम बेसिकली इंडेक्सिंग की बात कर रहे हैं. तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विथ डेटा टाइप और वैल्यूज और विद रिस्पेक्ट टू द साइज ऑफ एन एरे. साइज ऑफ एन एरे में हम ओनली ये 4 कैरेक्टर्स ले सकते हैं. बट अगर मैं बोलूंगा कि डेटा टाइप ऑफ एन एरे क्या क्या ले सकते हो, वो आप कुछ भी ले सकते हो. आपने खुद देख रखा है कि व्हेनेवर वी आर यूजिंग स्ट्रिंग पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, तो हम क्या कर रहे हैं? स्ट्रिंग एक एरे ही तो बना रहे हैं हम वहां पर, राइट? तो ये तो वैलिड है ना, ऑटोमेटिकली हमें पता है. तो यहाँ पर ये वैलिड है. बट हाँ, अगर मैं ये साइज लेट्स अज्यूम इसको मैं 10.5 कर लूंगा, तो ये इनवैलिड है, राइट? लाइक दिस. Now, so that is why here in this case you can see over there that to specify the array size, byte, short, यही तुम्हारे valid होंगे. And if we are going to use, we will get a compile time error. Always remember, you will get a compile time error. Now note the maximum allowed size in array. So अगर कोई इंटरव्यू में आपसे पूछता है, if somebody is going to ask you what is the maximum length of an array I can create, maximum single dimensional array length, right? So you will say the maximum value of integer data type, right? जो भी तुम्हारी maximum data type of integer है, because you can also, because the size of an array is totally dependent on your size of your integer data type. You cannot store कि हाँ भाई हम double और वो नहीं कर सकते. That is why it is finite in number, right? Now let's start with array initialization. So in today's problem, you have to solve this thing. So see how we are going to create an array. So first of all, you already know that how we are going to create a class, we are going to create a method. Now in this line, what I have done, I have created an array of your integer data type. And I want to assign the memory. What is the memory? 3. So I'm telling you what is happening actually. Whenever you are going to execute this code, we have a heap memory. Inside heap memory, what they will do, they will create a memory space for an array. And this array is of integer data type. Okay, so they will check that all the values should be in your integer. Okay, always remember. So we have created integer array AR OBJ. I'm just telling you. And here initially, whenever you are storing this value now, so JVM will provide us what? Default values. Always remember. So that is why you will get what is the default value of integer? 0, 0, and 0. Now after that, what will happen? Because we don't know the address of this array, हमें ये array का address ही नहीं पता है कहाँ पर है ये array. So इसका address हम कहीं ना कहीं तो store करेंगे. So that is why we required a variable, reference variable a. So basically array variable होता है, but I am just telling you so that you will understand. So ये array के ये जो address है ना, ये आपका a store कर रहा है.
तो सी दैट इज वाई मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, दैट इज वाई आई हैव एडेड दिस स्लाइड सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। सी मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ए की वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ। तो ए में एक्चुअली है क्या, ए में एक्चुअली एड्रेस है इस एरे का, ये एरे कहां पर अवेलेबल है, right? So this is the address of an array which we are getting it. But if I want to access the elements of an array, so using this, you just write it down a, use the brackets and just write down 0. So it will tell us कि हाँ a of 0 में क्या value है, 0 है. Why it is 0? Because default values of integers are what, your 0. So that is why you will get the value 0. So always remember this thing, okay? Why I am telling you these things in depth, so that you will understand later on. Otherwise you will get confused. अगर कभी भी तुम्हारे कोई error आता है, तुम कहोगे अच्छा a में क्या store हो रहा है, a में address store हो रहा है या indexing है, क्या है, कुछ कभी कभी confusion हो जाता है, right? So always try to understand कि a आपका actually store कर रहा है address, but if you want to access the values, तो हम वहां पर क्या करते थे, ऑब्जेक्ट बनाते थे, फिर डॉट करते थे, फिर वो आईएनटी वेरिएबल जो भी हमारा आई वेरिएबल होता था वो एक्सेस करते थे। तो हम एरे में क्या करते हैं, एरे में बिकॉज दिस इज अ डिफरेंट मेथड, ओके सॉरी डिफरेंट क्लास ऑब्जेक्ट विच वी आर क्रिएटिंग ऑफ एरे, सो वहां पर हम हमारे पास इन लोगों ने एक न्यू सिंटेक्स अवेलेबल किया कि हाँ अगर इफ यू वांट टू एक्सेस एन एरे, नो नीड टू राइट a dot a I like that. It's better to write a I like this if you want to access an array, right? Like now see, अब हमने यहाँ पर क्या किया है, इन दिस एरे मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक एरे बनाया है एंड द साइज ऑफ एन एरे इज 5। मैंने फर्स्ट एलिमेंट में सी मैंने क्या कर दिया, एक एरे बना दिया एंड द साइज ऑफ एन एरे इज व्हाट 5, 1 2 3 4 एंड योर 5। सो आपको पता है इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 4। मैंने क्या किया, a ऑफ 0 में 10, अभी तक हमने वैल्यू असाइन नहीं की थी, राइट? अभी तक हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने एरे को डिक्लेयर किया, हमने एरे का साइज को इनिशियलाइज किया है, अब हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू को असाइन भी कर रहे हैं। तो अब हम चाहते हैं ना, व्हाट वी वांट कि कोई ना कोई वैल्यूज भी तो हम असाइन करें, तो कैसे करेंगे, तो हम डायरेक्टली इंडेक्सिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, एक्सेस भी कर सकते हैं एज वेल एज उसमें कोई वैल्यू को इंसर्ट करना है तो इंसर्ट भी कर सकते हैं, राइट? तो array of 0 is equals to 10. See हम कैसे लिखते हैं, a of 10 sorry 0 is equals to 10, right? तो मेरे क्या आ जाएगा, 0 इंडेक्सिंग में 10 वैल्यूज आ जाएगी इनिशियली, बिकॉज डिफॉल्ट वैल्यूज तो सब 0 होती है आपको पता है, तो 0 0 ही रहेंगे। नाउ अब मैंने array of 1 में 20 कर दिया, राइट? array of 50 में 50 कर दिया। नाउ यू विल सी कि अरे यहाँ पर हमारा जो एरे का साइज है वो तो 5 का है, बट वी आर एक्सेसिंग द वैल्यू, which index we are accessing, a of 50. So do we have a of 50? No, we don't have. So that is why we will get an error. Similarly, if we are going to access a of 10.5, so we will again get an error. But always remember, फर्स्ट वाले केस में जो आपका एरर आएगा, that error is runtime error. सेकेंड केस में जो आपका एरर आएगा वो आएगा कंपाइल टाइम एरर। नाउ द क्वेश्चन दैट कम्स इनटू योर माइंड इज, सेकेंड टाइम पर हमारा कंपाइल टाइम एरर क्यों आया? बिकॉज एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि हम इंडेक्सिंग में वी कैन नॉट यूज अदर डेटा टाइप्स अदर देन योर इंटीजर, ओके? इंटीजर, फ्लोट, सॉरी इंटीजर, बाइट, कैर, शॉर्ट ही हम यूज कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट यूज फ्लोट एंड डबल डेटा टाइप। तो हम यहाँ पर रूल्स को ही फॉलो नहीं कर रहे हैं, दैट इज व्हाई वी आर गेटिंग अ कंपाइल टाइम एरर। बट व्हाई वी आर गेटिंग अ रन टाइम एरर ओवर देयर? बिकॉज अकॉर्डिंग टू आवर कंपाइलर ये सिंटैक्स, बिकॉज कंपाइलर आपका हमेशा सिंटैक्स चेक करता है, ओके? सो कंपाइलर कहेगा ओके ए इज ओके, 50 सही है, बिकॉज इंटीजर तो हम ले सकते हैं, दैट इज ओके। और ये जो हम एक्चुअल में वैल्यू असाइन कर रहे हैं ये हम कर रहे हैं रन टाइम में। whenever we are creating an object ना in Java, so we always create an object during run time. तो हमें पता नहीं है, लेकिन जब JVM इसको सर्च करेगा तो JVM will look क्या a of 50 तो है ही नहीं यहाँ पर, because the size of our array is just 5. So in that scenario what will happen, we will get a runtime error. So here we will get a runtime error and here we will get a compile time error. Okay, like this. And also we can custom override our customized value. If I'm going to write a of 0 is equals to 10,
राइट। अगर मैं बाद में फिर से a of 0 इज इक्वल्स टू 20 कर रहा हूँ, सो इट मीन्स अब मैंने वैल्यू को क्या कर दिया, ओवरराइड कर दिया, मेरी वैल्यू 20 हो गया, आई हैव अपडेटेड माय वैल्यू, सो इट इज पॉसिबल, राइट। सो नाउ अभी तक हम क्या कर रहे थे, देखो हमने सबसे पहले डिक्लेयर किया था, फिर हमने यहाँ पर साइज इसका इनिशियलाइज किया था, और फिर हम इसको क्या कर रहे थे, असाइन कर रहे थे वैल्यू, राइट। ये साइज आपका 4 होगा, सॉरी आई हैव मेड अ मिस्टेक, करेक्ट इन योर पीपीटी। जब आप पीपीटी को भी देखेंगे, मैंने ऑलरेडी अपलोड भी कर दिया, बट स्टिल ये पीपीटी जब आप देखोगे तो ये 4 होना चाहिए, राइट, ये साइज। Why it is 4? Because see 0 1 2 3, मतलब 0 से स्टार्ट है, 1 2 3 4, 4 इंडेक्सिंग है ना आपकी, राइट। सो सी मैंने क्या करा, ये 3 स्टेप्स हम यूज कर रहे हैं। पहले हम इंटीजर को इनिशियलाइज कर रहे हैं, सॉरी डिक्लेयर कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं, फिर असाइन कर रहे हैं। व्हाट इफ यू वांट कि यार मैं ना ये सब वैल्यूज को एक ही लाइन में मैं इंसर्ट कराना चाहता हूँ, इज देयर एनी वे इन जावा? सो यस, देयर इज अ वे इन जावा। तो दिस वे इज अ सिंगल लाइन केस। सो अगर आपको पता है कि साइज क्या है और वैल्यूज उसी समय आपको स्टार्टिंग में ही पता है व्हेन टू यूज दिस सिंटैक्स, ओके। अगर आपको स्टार्टिंग में ही पता है कि क्या क्या वैल्यूज आपको इंसर्ट करनी है और आपको क्या क्या बेसिकली व्हाट इज योर साइज ऑफ एन एरे, राइट। So always try to use this thing. But in reality, I'm 100% sure that you will never use this thing. Why? Because you never know कि यार क्या हमारी data values रहेगी और क्या हमारा size रहेगा. So we are not at all sure about this thing. So it is only required कि जब आपको पता हो गया, अच्छा ये values मेरे को store करनी है, right? So in your problems, like in your lab problems, you are not able to use this thing. I will tell you how, why you are not going to use this thing. Okay, so that is why. But if you know about this thing, I will tell you about this method. Is that first of all declare an array, use curly braces, okay, and then enter the value. Automatically हमारा array क्या कर देगा? It will find out, अच्छा we have created an array of size 4, okay, okay, and we have entered only integer values, so the indexing will be 0 1 2 3 like this. So this is how basically you can create if you want to create in a single line. But I must say that only use this method. You will find out by your own कि हाँ ये तो हम तभी use कर पाएंगे जब हमें values भी पता होंगी और size भी पता होगा। Value size नहीं पता होगा, so how can I find out कि हाँ भाई क्या values होनी चाहिए, मुझे तो पता ही नहीं है ना, right? Like this. So now, as I mentioned earlier, that in array we have two types of arrays. First one is your single dimensional array, and second one is your multi-dimensional array. So till now, if you will see over there, whatever the concept we have covered and whatever the notations I have told you till now, that are basically related to your single dimensional array. So we haven't talked about multi-dimensional array. So later on, we are going to talk about multi-dimensional array. First, let's take few example and try to understand what do you mean by single dimensional array. So see, in this program, what I have done, I have created a class. I have created one method. You already know that whenever we are creating a class in any Java programming language, so it is mandatory that one of the class should hold this public static void main method. Otherwise, we will get an error. And where you will get an error, always remember runtime. रन टाइम ही आएगा आपका एरर, कंपाइल टाइम में हमेशा आपका एग्जीक्यूट सही करेगा, राइट। अगर आपसे कोई बोलता है कि अच्छा एक आपके पास क्लास है एंड इन दैट क्लास यू डोंट हैव एनीथिंग, अगर आपकी एक एम्प्टी क्लास है, अगर आप उसको कंपाइल करोगे, सो व्हाट आउटपुट यू विल गेट, कंपाइल करोगे तो क्या कोई एरर आएगा? देन ऑलवेज अंडरस्टैंड कि कंपाइल टाइम में कोई एरर नहीं आएगा। एरर कब आएगा? रन टाइम में आएगा। क्यों? बिकॉज आवर जेवीएम विल ऑलवेज सर्च फॉर, स्टार्टिंग कहां से करता है वो, हमारा जेवीएम will always look for public static void main method. So if our JVM will not able to find out कि अच्छा है ही नहीं इसमें main method, so we will get an error, right? So now here in this scenario, what we have a class, we have a method. Now we have what? We have created an array of integer data type, and we have initialized what? The size of an array. हमने क्या कर दिया यहाँ पर? Size भी बता दिया. So what we have done, we have created an array of size 5. 1 2 3 4 0 1 2 3 4. सी मैंने यहाँ पर बना दिया. सो यू ऑलरेडी नो दैट जब हम ये लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे ना, सो ऑटोमेटिकली यहाँ पर 0 0 0 0 वैल्यूज आ जाएंगे, बिकॉज डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ इंटीजर की क्या वैल्यू रहती है? 0 0 0 0. नाउ आफ्टर दैट व्हाट आई एम डूइंग, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर? इनिशियलाइज कर रहा हूँ वैल्यू.
0 1 2 3 4 में 5 10 15 20 25। तो यहाँ पर आपकी क्या आएगी, 5 आएगा, 10 आएगा, देन आपका 15 आएगा, देन ए ऑफ 3 में आप 20 कर रहे हो, राइट, और लास्ट में क्या कर रहे हो आप 25 कर रहे हो। सो अब आपने वैल्यूज को भी क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। नाउ आई वांट टू एक्सेस दीज वैल्यूज। मैं क्या चाहता हूँ, आई वांट कि यार ये जो एरे की जितनी भी वैल्यूज हैं, आई वांट टू एक्सेस ऑल दीज वैल्यूज। सो हाउ कैन आई एक्सेस दिस थिंग? सो द फर्स्ट वे तो आपके पास क्या है, फर्स्ट वे आप क्या करो, system डॉट आउट डॉट println and just write down a of 0, so it will give me some output. Again you will write system.out.println array of 1, again print the value like this. So you already know that कि अगर हमारे पास 100 है, suppose size of an array is 100, क्या हम 100 टाइम्स से system.out.println लिखेंगे? नहीं। So you know that कि why we, so in that scenario कि अगर हम कोई एक टास्क जो हम हमेशा रिपीट करते हैं, तो how to solve that particular scenario? So you are already aware about that we always use loops in that scenario. So again हम क्या करेंगे, यहाँ पर loop use करेंगे, और always remember array से एक associated एक method होती है, that is known as your length. ऑलवेज रिमेंबर ये जो लेंथ होता है ना, ये मेथड नहीं होती है, ये लेंथ आपका यू कैन कॉल इट एज अ वेरिएबल, ओके। और ये जो लेंथ होता है ना, इट विल, और अगर आप a डॉट लेंथ करोगे ना, एंड इफ यू आर गोइंग टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ a डॉट लेंथ, सो इट विल टेल कि आपका जो साइज ऑफ एन एरे जो भी है, जैसे इस केस में हमारा साइज ऑफ एन एरे क्या है, 5 है, तो 5 ही रिटर्न करेगा, राइट। तो यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, जो हमारा लूप चल रहा है वो 0 से तो चल रहा है, बट सी ये लेस देन इक्वल टू नहीं है, लेस देन 5 चल रहा है। तो आपको पता है क्या क्या कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड होंगी, 0 होंगी, 1 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 4 होगी, और 5 नहीं होगी। 5 क्यों नहीं होगी, क्योंकि 5 इज लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, राइट। तो उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इनकी वैल्यूज को प्रिंट कर रहा हूँ। सो व्हाट विल हैपन, a ऑफ 0 की क्या वैल्यू है, सो इट विल प्रिंट द वैल्यू 5 ओवर देयर। मैंने प्रिंट एलन यूज किया है, सो न्यू लाइन पर आएगा फिर से। a ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, 10 है, a ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, 15। सो इफ आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस कोड, सो दिस इज द आउटपुट आई विल गेट, राइट। तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया, सिंगल डायमेंशनल एरे को क्रिएट भी कर दिया, और एक्सेस अगर आप करना चाहते हो तो इन मोस्ट ऑफ द सिनेरियो वी आर गोइंग टू यूज द कांसेप्ट ऑफ लूप, राइट। नाउ अब हमने क्या किया है हियर इन दिस केस, सी अब मैं क्या कर रहा हूं, अभी तक हम एरे क्या कर रहे थे, लाइक आई हैव टोल्ड यू, सो इन टुडेस प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ यू आर गोइंग टू यूज दिस थिंग। अभी तक हम क्या कर रहे हैं, हमें एरे का साइज भी पहले से पता है, हमें एरे की वैल्यूज भी क्या क्या है वो भी हमें पता है। सो आपको पता है अगर इस टाइप का सिनेरियोज है, इट्स बेटर कि मैं यहाँ पर एरे को इतने मल्टीपल लाइंस में क्यों लिखता हूँ। मैं, मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट वे पता क्या था, यहाँ पर बेस्ट वे था, मैं डायरेक्टली 5 10 15 20 और 25 लिख देता, अगर मुझे एलिमेंट्स भी पता है एज वेल एज मुझे साइज ऑफ एन एरे भी पता है। सो इट्स बेटर दैट आई शुड गो फॉर दिस थिंग। सो आप पर है कि आप कौन सा सिंटेक्स यूज कर रहे हो, अगर आप इसको यहाँ पर करना चाहते हो, यहाँ पर बोथ आर फाइन, राइट। तो अब यहाँ पर तो आपने ये यूज कर लिया, बट व्हाट इफ कि अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो वैल्यूज हैं ये भी आप रन टाइम पर लो, आपको पता नहीं है साइज ऑफ एन एरे क्या है, लेकिन ये जो साइज ऑफ एन एरे है ना, ये आप रन टाइम पर लोगे। सिमिलरली आप ये जो वैल्यूज भी असाइन करोगे ना, ये भी आप रन टाइम पर लोगे। तो हाउ यू आर गोइंग टू डू इट, तो दैट इज व्हाई यू ऑलरेडी नो कि हमें स्कैनर क्लास की रिक्वायरमेंट होती है whenever we want कि हमारी, हाँ भाई क्या रन टाइम वैल्यूज होंगी, राइट। तो सबसे पहले what we are doing, we are basically creating, we are entering the enter the length of an array, we are displaying this message and we want कि आपकी length of an array क्या होना चाहिए। तो you already know that कि हमने scanner class बना दिया है, s is a reference variable। तो जब हम s dot next int करेंगे तो जो भी हमें integer वैल्यू देनी है वो हम वैल्यू, और ये जो इंटीजर लेंथ हमने ऑलरेडी डिक्लेयर कर रखा है, इसमें हम असाइन कर रहे हैं। लेट्स अज्यूम हमने यहाँ पर 5 असाइन कर दिया, राइट। तो हमने रन टाइम में 5 भी दे सकते हैं, 10 भी दे सकते हैं, अभी हमें पता ही नहीं है कि आपका साइज ऑफ एन एरे क्या है। आफ्टर दैट अब हमें क्या बनाना है, बिकॉज हमें एरे तो क्रिएट करना है। अब हम एरे कैसे बनाएंगे, int a बनाएंगे, व्हाट इज द साइज ऑफ एन एरे, हम ये वेरिएबल एक्चुअल में इसमें असाइन करेंगे। नाउ इट मींस दैट यू हैव क्रिएटेड एन एरे ऑफ साइज 5। चलो ये चीज तो हमने कर दी। अब हमारा सेकंड टास्क क्या है, आवर सेकंड टास्क इज दैट कि जो हम ये साइज एरे में जो भी हम एलिमेंट्स रखेंगे ना, राइट नाउ अगर हमने अभी यहाँ पर एरे तो बना दिया, राइट, 0 1 2 3 4 और 0 0 0 0, बिकॉज डिफॉल्ट वैल्यू आपकी एरे की 0 थी। ये आपने फर्स्ट टास्क आपका कंप्लीट हो गया।
अब व्हाट आई वांट कि मैं जितनी वैल्यूज भी हैं, ये जो वैल्यूज इंडेक्सिंग में करूं, ये सबके सब भी मैं रन टाइम से ही एंटर करूं. So how you are going to do it? So again, you are going to use the concept of loop. So using I you are going to use as an indexer, okay, which will tell कि अच्छा zero में आपका s dot next int. So अगर आप 10 पास कर रहे हो तो 10 आ जाएगा यहाँ पर. 2 पास कर रहे हो सेकंड में तो 2 आ जाए, राइट. सो आपने लूप से इसको एक्सेस किया. सिमिलरली अगर आपको डिस्प्ले करना है तो दिस थिंग आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ओके, कि आपको एक्सेस कैसे करना है. सो दिस इज हाउ बेसिकली यू कैन क्रिएट एन ऐप. Okay, so यहाँ पर आप रन टाइम. So in your today's problem, in all the problems, what you need to do, आपको स्कैनर यूज करना ही पड़ेगा, because टेस्ट केसेस अदरवाइज आपके सेटिस्फाइड ही नहीं होंगे, राइट. now creating an object array of objects. So आपको पता है अभी कि what is an object. Okay, so what we are doing over here, we want कि अच्छा we want to create an array which will hold what objects. बिकॉज अभी क्या कर रहे हैं हम, खाली एरे को ही स्टोर कर रहे हैं. सो एरे भी बेसिकली आप बोल सकते हो कि एक एरे इज आल्सो इंटीजर, एरे इज आल्सो अ क्लास जिसकी हम वैल्यूज को स्टोर कर रहे हैं. सिमिलरली व्हाट आई वांट कि हाँ मैं आई वांट टू क्रिएट एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास, ऑब्जेक्ट व्हिच विल होल्ड व्हाट, सम ऑब्जेक्ट्स. सो क्या हम एरे से होल्ड कर सकते हैं? यस वी कैन. सो हाउ कैन वी होल्ड इट? So in this problem what I have done, I have created a class. फिर उसके बाद मैंने दो इंस्टेंस वेरिएबल यूज किए हैं. This is what? This is a constructor. Why? Because this is a method having no return type values and the size of name of method is similar to our class. So ये argumented methods है, right? So arguments इसमें हम पास कर रहे हैं, argumented constructor है. Now let's get back to here. So here what we have done, अभी तक हम जो array बना रहे थे वो क्या बना रहे थे? Integer data type का बना रहे थे. राइट नाउ आई वांट कि अब जो मैं एरे बनाऊं विच विल होल्ड व्हाट. अभी int का बना रहा था मैं एरे, तो वो क्या कर रहा था, ये कौन सी वैल्यू होल्ड कर रहा था? इंटीजर वैल्यू होल्ड कर रहा था. नाउ आई वांट कि ये ऑब्जेक्ट का एरे बने. सो ऑब्जेक्ट का एरे अगर इस क्लास के ऑब्जेक्ट का एरे बने तो व्हाट आई विल डू, आई विल यूज दिस डेटा टाइप. ओके, सो यू ऑलरेडी नो दैट क्लास का ये जो आपका होता है, क्लास नेम इज नोन एज योर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप. तो मैंने क्या किया, एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कर दिया. इट मींस अब ये जो एरे है वो क्या स्टोर करेगा? ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस करने में, राइट. तो सिमिलरली अब मैंने क्या कर दिया, एक ऑब्जेक्ट्स बना दिया. व्हाट इज द साइज, कितने ऑब्जेक्ट्स से स्टोर कर सकता है ये एरे? 5 ऑब्जेक्ट्स ये क्या कर सकता है? स्टोर कर सकता है. नाउ आफ्टर दैट यू कैन सी जो हमारा फर्स्ट इंडेक्सर है, यू नो कि 0 हमारा इंडेक्सर है, इसमें हम फर्स्ट अपना ऑब्जेक्ट स्टोर कर रहे हैं. सो आपको पता है कि ऑब्जेक्ट में कितने आर्ग्यूमेंट्स हम पास करें? 2 आर्ग्यूमेंट्स पास करें, क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल कितने हैं? 2 ही तो है हमारे पास इंस्टेंस वेरिएबल. तो दैट इज व्हाई हमने यहाँ पर फर्स्ट ऑब्जेक्ट स्टोर कर दिया. सिमिलरली सेकंड भी कर दिया, थर्ड भी कर दिया. तो बेसिकली हमने बनाया 5 का था बट हमने 3 किया. तो बेसिकली व्हाट आई टोल्ड यू कि हमेशा ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट कि साइज क्या होना चाहिए आपके एरे का. तो देखा जाए तो मैंने यहाँ पर 2 साइज, जो 2 मेमोरी लोकेशन है वो क्या कर दी, मैंने वेस्ट कर दिया, राइट. तो वो मेरा वेस्टेज हो गया. वाई? बिकॉज मैं तो 3 ही को यूज कर रहा हूँ, तो इट्स बेटर कि मैं इसको 3 करता ना, राइट. सो नाउ आफ्टर दैट अगेन इफ आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस कोड, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, माई एरे डॉट जीरो. तो जैसे ये माई आई की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट 0 होगी. सो व्हाट इट विल डू, इट विल गो इनटू माई फर्स्ट इंडेक्सर. फर्स्ट इंडेक्सर आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट को स्टोर कर रहा है. फर्स्ट ऑब्जेक्ट में हमें क्या चाहिए? वी वांट आईडी. जैसे हम ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल से एक्सेस कर रहे थे ना, अब हम किससे एक्सेस कर रहे हैं? एरे के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, एरे इंडेक्सर के थ्रू हम एक्सेस कर रहे हैं. एवरीथिंग इज सेम, कोई डिफरेंट नहीं है. तो इट इज पॉसिबल इन जावा. सो हेंस if somebody is going to ask you that can we create an array of objects, yes we can create an array of objects, right. So if you are going to execute this code, see this is the output we will get, right. Now the third thing which is very important is passing an array to a method. अभी तक हम जब आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे थे तो हम आर्ग्यूमेंट क्या पास करते थे? सपोज मैंने एक मेथड बना दी, राइट. void सपोज void max मेथड बनाई, तो मैं क्या करता था? तो कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करता था. what I will do, either I will pass some argument int a, int b like this. so ये आर्ग्यूमेंट ही तो करता था. let's assume if I want that we should pass an array as an argument. हम चाहते हैं कि एक array को हम पास करें as an argument. So whether it is possible in Java,
आई थिंक ऑल ऑफ यू आर ऑलरेडी यूजिंग. अगर हम देखें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन PSVM, तो हम वहां पर क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग ARGS. सो एक्चुअली इसमें हम कर क्या रहे हैं, अगर आप देखोगे हम इसमें एक आर्ग्यूमेंट नेम का जो वेरिएबल है, जो बेसिकली स्ट्रिंग डेटा टाइप का है, वही तो वो एरे बेसिकली वही तो हम बेसिकली पास कर रहे हैं, विच इज टेकिंग दिस वैल्यू, राइट. सो इट मींस दैट आवर मेथड कैन टेक an array. So we can pass an array to a method. So how to pass an array in a method? See, बहुत simple है. What we have done, we have created a class, we have created a method. See, ये method क्या pass कर रही है, it is taking an array. So that is why we are going to write int my arrays, जैसे हम public static void main में लिखते हैं ना, similarly वही syntax है. String args हमने यहाँ पर लिख दिया int, वही जो भी हमारा variable का name. Now after that basically इस क्वेश्चन में हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, राइट. सो यू ऑलरेडी नो दैट कि हम एक वेरिएबल यूज करेंगे विच विल हेल्प अस टू फाइंड आउट कि कौन सी मैक्सिमम वैल्यू है, और वो चेक करेगा. नाउ मेन थिंग इज कि हम पास कैसे करेंगे. सी, मैंने यहाँ पर सिंगल लाइन एरे बनाया है, राइट, बिकॉज आई नो द साइज ऑफ एन एरे एज वेल एज द वैल्यू. सो इट्स बेटर, मैंने क्या बना दिया, आई हैव क्रिएटेड दिस एरे एंड दिस एरे रेफरेंस वेरिएबल आई एम पासिंग हियर. सो नाउ ऑटोमेटिकली ये जो एरे होगा ना, ये ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, ये जो जिस साइज का एरे है ना, ये असाइन कर लेगा, राइट. बिकॉज यहाँ पर हम पूरा इसका रेफरेंस वेरिएबल का साइज कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली अब ये जो आपका एरे है, माई एरे इज एन एरे ऑफ इंटीजर डेटा टाइप एंड द साइज ऑफ एन एरे इज व्हाट, योर 6, राइट. और एलिमेंट्स भी अब वो एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग माई एरे. भी अब हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं इसके वैल्यूज को, राइट. सो दिस इज हाउ बेसिकली यू कैन क्रिएट एन एरे. So if you are going to execute this program, because we want कि हमारा maximum क्या होनी चाहिए value, so that is why you get the value 301 over here, right. It's quite simple. Similarly, if you want to return भी कर सकते हैं आप. जैसे अभी तक हमने क्या किया था, return हम क्या करते थे, either integer value, either double value, either string value, either boolean value. अब हम क्या कर रहे हैं, here we are returning in an array of which data type, integer type. So yes, it is possible. So आपको क्या करना होगा, int and you have to write brackets. So bracket will tell us कि हाँ हमको एक integer क्या कर रहे हैं, return कर रहे हैं. So this is how basically you can return an array in your Java programming language, right? So these are the things we have already discussed. So if you are going to execute this code, we will get this out. So now let's talk about multi-dimensional array. So in your today's problem, some problems are basically related to multi-dimensional array. तो मल्टी डायमेंशनल एरे का मैंने आपको एक सिंटेक्स बता दिया था. सपोज आई वांट टू क्रिएट 2D एरे, तो मैं क्या करूंगा, 2 टाइम्स ये लिख दूंगा, राइट, लाइक दिस. सो इट मींस मैंने एक 2 डायमेंशनल एरे ऑलरेडी क्रिएट कर दिया, राइट. सो सिमिलरली सी what I have done, if I am going to create an array of 2-dimensional array, so this is how basically I can create a 2-dimensional array. So what is the size, having what, your 4 rows and what, your 5 columns. आपके columns कितने हैं, 5 columns है, like 4,5 आपके 4 columns है, right. So एक आपकी मैट्रिक्स बनती है. whenever we are creating an 2-dimensional array or 3-dimensional, what we generally do, we create a matrix. matrix आपको पता है m cross n होता है. m is your row and n is your columns, right. तो यहाँ पर कितनी rows है, rows are this one. तो मेरी कितनी है, 1 2 3 4 rows है, 5 columns, 3 1 2 3 4 5. सो 5 कॉलम्स बन गए. सो इट मींस इनिशियली आपको पता है क्योंकि इंटीजर डेटा टाइप का है, तो सबके सब 0 0 0 वैल्यूज. तो दिस इज हाउ बेसिकली यू कैन डिक्लेयर अ 2D एरे. और अगर आपको ऑलरेडी साइज भी पता है और 2D एरे के बारे में भी पता है, तो हाउ कैन यू क्रिएट, आप क्या करोगे, यू यूज 2 कर्ली ब्रेसेस. सी यहाँ पर फर्स्ट कर्ली ब्रेसेस, अगेन जब आप करोगे फर्स्ट रो के बारे में बताएगा, और दिस विल टेल अस अबाउट सेकंड रो, राइट. तो ये आपका फर्स्ट रो है और ये आपकी सेकंड. See, in Java एक बहुत important concept होता है. That concept is like here, suppose if I want to create an array or multi-dimensional matrix, so होता क्या है, multi-dimensional matrix ऐसा नहीं होता कि आपकी 20 साइज की हो गई है, कि आपकी फर्स्ट रो में भी 5 एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो, सेकंड रो में भी 5 एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो, थर्ड में भी 5 करना है. नो, इफ यू वांट कि हमारे फर्स्ट रो में, जैसे इस वाले एग्जांपल में फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट्स है, सेकंड रो में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट. So it is valid in Java because क्यों, अब why it
Java is using this technique because see अगर हमारे पास कोई second row है और it is not storing or it is only taking only 3 values, so why to waste memory, right? So हम एक और value को खाली waste करें. तो similarly हम क्या करते हैं, whenever you want to create your own means एक row में first row में कितने तुम्हारे column होने चाहिए, so it's up to you. Like for example, this is my first row, this is my second row, and this is my third row. So see what I have done. I have created a 2D array and I have decided कि मैं 3 rows बना रहा हूँ, right? I have created 3 rows, 1, 2 and 3. Let's assume मैंने क्या करा, एक मैट्रिक्स बनाई है और मैट्रिक्स में मैंने क्या कर दिया 1, 2 and 3, 0, 1, 2 ये इसकी इंडेक्सिंग है, राइट? अब मैं क्या कर रहा हूँ, एरे ऑफ 0, जो आपका एरे ऑफ 0 क्या है, ये है एक्चुअली 0, इसको कर देता हूँ 1 कर देता हूँ बिकॉज इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, राइट? अब 0 में कितने एरे, बिकॉज मल्टी डायमेंशनल एरे इज एरे ऑफ एरे, एरे में आप एरे को स्टोर कर रहे हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज योर मल्टी डायमेंशनल एरे. तो फर्स्ट इंडेक्सिंग में आप क्या, टू एन एरे यू आर आल्सो स्टोरिंग वन एरे जो आपका जिसका साइज क्या है 2 है. सो दैट इज व्हाई इट मींस फर्स्ट रो में आपकी कितनी कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स. सेकंड रो में आपके कितने एरे हैं, ओनली 1 एरे, राइट? और थर्ड में आपके कितने, 3 एरे. सो इट इज डायनामिक इन नेचर. So you can set whatever the how many rows, how many columns for that particular row you want. It's up to you. It is valid in Java. Okay, so it is very useful whenever we are creating applications ना. So आपको पता चलेगा कि अच्छा फर्स्ट रो में तो हमें इतने पैरामीटर चाहिए, तो you will consider कि अच्छा ये स्टोर कर दो. But you don't want to waste some memory, so आप क्या करोगे, अच्छा सेकंड रो के लिए सपोज जो भी आपका पैरामीटर है, सेकंड पैरामीटर, you will say कि अच्छा उसके लिए मुझे 100 कॉलम्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर मुझे 1 कॉलम की भी रिक्वायरमेंट है, आई वांट दिस. तो सी मेमोरी आपका बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन होगा, राइट? सो दैट इज दैट. सिमिलरली सी अगर मैंने 3 डायमेंशनल एरे बना दिया तो आप देखोगे कि फर्स्ट रो आपके फिर उसके कॉलम, फिर कॉलम का भी आपकी जी एक्सिस होती है, जैसे एक्स वाई जी एक्सिस होती है ना, एक्स वाई एंड जी एक्सिस. सो सिमिलरली आपका क्या रहेगा, वैसे ही आपका क्या रहेगा, इसका डायरेक्टली एक्सिस रहेगा, राइट? तो हमने क्या किया, सबसे पहले 2 रोज बनाई है एंड फर्स्ट रो में फिर मैंने क्या किया, अगेन मैंने 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट किया, राइट? और 2 डायमेंशनल एरे का क्या साइज है, 3 है. फिर मैंने उसमें क्या करती, उसकी जो 0,0 लोकेशन है उसमें मैंने फर्स्ट एलिमेंट, तो एक ही एलिमेंट आ रहा है. यहाँ पर मैंने 2 बनाया तो 2 आ रहा है. सो दिस इज हाउ बेसिकली यू कैन क्रिएट एन एरे इन योर जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट? So this is how basically, so मैंने सिंगल लाइन, if I know the size of an array I will create. So you know that कि अगर हमारे पास 2 dimensional array है तो we required 2 loops. With 1 loop we won't be able to access it. Why? Because एक आपका row चलेगा, एक आपका column चलेगा. So that is why we required 2 loops in order to basically access the values. First I आपका let's assume row को access कर रहा है and J आपका column को access, right? So using this you will be able to access all these problems. So see मैंने क्या किया, एक मैट्रिक्स ऑलरेडी क्रिएट किया है. अब मैं 0,0 करूंगा. So 0,0 में क्या वैल्यू है, 34. आई गेट दिस वैल्यू. 0,1 में क्या है, 87 है, आई गॉट 87. 0,2 में क्या वैल्यू है, 39. सो आई गॉट 39. अब 0,3 ये सेटिस्फाई नहीं होगा, तो ये कंडीशन आपका टर्मिनेट हो जाएगा. ये अब यहाँ जाएगा, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी. So 1,0 क्या है, 31. So I got this value. 1,1 में क्या है, 65. I got 65. 1,2 I got 12 value over there. 1 फिर अगेन ये टर्मिनेट हो जाएगा. फिर I की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 3 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, सॉरी. So 2,0 you got this value, this value, right? So similarly अगर आपको 2 values को एक्सेस करना है, सॉरी एडिशन परफॉर्म करना है, so how can you perform it? So you will use this thing and see मैंने एक और array create किया, multi dimensional array. The size of an array is 2 rows 3 columns. यहाँ मेरे जो input में भी है वो भी क्या है, 2 rows and 3 columns है. Based on that मैं क्या कर रहा हूँ, सबका addition कर रहा हूँ and I am storing it over here. So this is how basically you can solve all these problems and just try to understand कि please don't write length method. Okay, ये तो आपको compilation error देगा. Length, just try to write out length. If you want to find out ना कि आपका एरे का साइज क्या है, just write a length. Don't write length, this method. It will give you compile time error, right?
So let's go through your problems. So I have already activated these problems. So now you can solve all those problems. But before that, I will just give you one. Uh, I will just provide you one solution, okay, so that you will understand कि अच्छा problems को कैसे solve करना है. I can see that most of you have already solved the problem. That's great. But those who are having some issues कि कैसे solve करना है, please don't get disheartened. तो हम देखते हैं कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, राइट. तो अब इस क्वेश्चन में क्या है, वी हैव टू राइट अ प्रोग्राम टू टेक n एलिमेंट्स इन एन एरे. हमें क्या करना है, क्या एक प्रोग्राम बनाना है विच विल टेक n एलिमेंट्स. हमें पता नहीं है n क्या है, राइट. ये n क्या है, ये बेसिकली हम रन टाइम पे ले रहे हैं वैल्यूज. ये वैल्यूज हम कहाँ ले रहे हैं, रन टाइम में. जैसे मैंने 5 लिया, सो इट मींस अब मेरे को 5 वैल्यूज स्टोर करनी, राइट. सो हाउ टू राइट अ प्रोग्राम फॉर दिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑलरेडी नो कि मैं क्या करूंगा, एक क्लास बनाऊंगा. क्लास का नेम फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन. नाउ मैंने क्लास तो बना दी है. अब यू ऑलरेडी नो कि अब यहाँ पर हमें ना कोई ऑब्जेक्ट बनाना है ना कुछ करना है, तो इट्स बेटर वी डोंट रिक्वायर्ड एनी इंस्टेंस वेरिएबल एंड ऑल. व्हाट वी रिक्वायर्ड कि हमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन तो होना चाहिए. व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू राइट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, राइट. सो देखो यहाँ पर भी हम जो आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं वो क्या पास कर रहे हैं, ARGS. Sometimes कोई मेरे से स्टूडेंट पूछता है कि सर इज इट मैंडेटरी टू राइट ARGS. ऑलवेज रिमेंबर ये ARGS बस एक वेरिएबल का नेम है, राइट. इवन तो अगर मैं इसको A भी लिखूंगा ना, देन अगेन इट विल वर्क फाइन बिकॉज दिस इज जस्ट अ वेरिएबल नेम. So you can write whatever the name you want. But why we are writing ARGS? Because as I told you in my first or second lab, कि variable का name भी always choose wisely. Okay, ऐसे ही मत select कर देना. So that we will understand कि अच्छा ये arguments ले रहा है. ARGS means arguments, right? Now after that, what we want, because हम ये value अगर आप देखोगे test cases में, ये value हम सब run time values ले रहे हैं. और ये हम scanner से ले रहे हैं. So how we are going to solve it? So we are going to use scanner class. But you already know कि ये scanner class कहाँ पर available है. So that is why what we are going to do, we are going to import, right? Import java.util. Right. तो अब आप क्या करोगे, import java.util करोगे. And what you are going to do, you are going to create a class reference variable. Then you will create an object of what? Your scanner class. अब मैंने scanner class का क्या कर दिया, object बना दिया. Now after that what I am going to do, I am going to write system.in which will take this value. अब मैंने ये सब चीज आपकी work properly work कर. Now after that what I want कि ये जो value है, जो ये scanner से value मैं ले रहा हूँ, चलो ये तो सही है. First value में क्या ले रहा हूँ, size of an array. So मैं क्या बनाऊंगा, एक variable लूंगा int and I will make the name of this variable size. And here I am going to enter sc.next int. तो sc.nextInt क्या स्टोर करेगा, साइज ऑफ एन एरे. सपोज मैं फर्स्ट वाले केस में क्या पास कर रहा हूँ, 5. तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, तो साइज में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा. सो राइट नाउ आई हैवंट क्रिएटेड एन एरे. अब मुझे क्या बनाना है, मुझे एक एरे बनाना है ऑफ विच डेटा टाइप, इंटीजर डेटा टाइप, राइट. तो अब मैं इसको एरे कैसे बनाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, आई एम गोइंग टू क्रिएट एन एरे लाइक दिस एंड आई एम गोइंग टू राइट int. सपोज एरे का नेम वेरिएबल, वट एवर द वेरिएबल यू वांट टू यूज. मैंने क्या किया, ARR यूज किया. अब आफ्टर दैट आई वांट टू क्रिएट एन एरे. सो व्हाट आई विल डू, आई विल डायरेक्टली राइट int. ऑलवेज ट्राई टू राइट आउट कि हम किसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, इंटीजर एरे का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, राइट. एंड व्हाट इज द साइज ऑफ एन एरे, हमने रन टाइम वैल्यूज में ले रहे हैं. सो दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू राइट एंड वी विल मेक इट एज साइज. तो हमने एक एरे बना दिया है ऑलरेडी और उस एरे का साइज क्या है, 5. Okay, and using this variable name we are able to access this thing. But the problem is we want to store these values too. और ये values जो मैं store कर रहा हूँ, ये कहाँ से store कर रहा हूँ, ये store मैं कर रहा हूँ run time से. So either मेरे पास एक option है, या तो मैं ये multiple times ये वाली statement लिखूं. But is it possible? ये फर्स्ट केस में तो चलो वैलिड हो जाएगी, सेकंड केस में क्या होगा, सेकंड केस में फिर हमारे साइज वो हो जाएगा, डिपेंड करेगा. So that is why अगर आप सेम लॉजिक कभी यूज कर रहे होते हैं in order to insert some values or anything whenever you want to execute multiple times, so you always use the concept of an for loop, right. So आप क्या करोगे, यहाँ पर int I यूज करोगे, I equals to 0. So I is basically आपका एक इंडेक्स है,
right? I am going to write it as index so that you will understand. ये आपका एक index variable है. What it is doing, we are using it for array indexing, right? अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, I is less than, for example, size, because आपका array का size क्या है, for first case 5 है और हम start कर रहे हैं इसको 0 से, so condition हमें देनी पड़ेगी less than. Why? Because अगर हम इक्वल टू दे देंगे फिर तो array of size 6 हो जाएगा, तो आपको एरर दे देगा, राइट? क्योंकि array का साइज तो 5 है. तो अगेन आई एम गोइंग टू राइट i प्लस प्लस. नाउ आफ्टर दैट व्हाट आई एम डूइंग, अब मैं इस एरे में जो भी मेरा एरे है, राइट, ये एरे में ARR में मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यू को स्टोर कर रहा हूँ. सो इस इंडेक्स की वैल्यू में मैं क्या कर रहा हूँ, sc डॉट नेक्स्ट int. सो जो भी मैं रन टाइम में वैल्यू पास कर रहा हूँ ना यूजिंग दीज टेस्ट केसेस, वो सब वैल्यू इस इंडेक्स में आ जाएगी और दैट इज व्हाई आई विल बी एबल टू एक्सेस ऑल दीज इंडेक्स, राइट? सो ये कब तक चलेगा, जब तक आपका साइज ऑफ द एरे फुल नहीं हो जाता. नाउ आफ्टर दैट व्हाट आई वांट, अकॉर्डिंग टू माय क्वेश्चन, आई हैव टू डिस्प्ले दिस मैसेज. सो यू ऑलरेडी नो कि डिस्प्ले कैसे करते हैं मैसेज को. सो लेट मी कॉपी पेस्ट दिस थिंग. So I'm going to write down like this. I'm going to write system dot out dot println. Okay, why I'm writing println? Because वो आपका न्यू लाइन में होना चाहिए, राइट? सो मैंने एरे ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर आपका प्रिंट कर दिया. नाउ आई वांट टू प्रिंट, अब मुझे ये जो आउटपुट में है, ये जो एरे में हम इंसर्ट भी कर रहे हैं ना, ये सबको मेरे को वैल्यूज को प्रिंट करना है. सो हाउ कैन आई प्रिंट दिस थिंग? अगेन मैं क्या करूंगा, फिर से यही लूप को एग्जीक्यूट करूंगा. बट हियर मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है, राइट? मुझे प्रिंट करना है. सो इन दैट सिनेरियो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट प्रिंट दीज वैल्यूज. सो प्रिंट किससे करते हैं हम हमेशा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, एंड आई एम गोइंग टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ दिस इंडेक्स. सो अगेन वो कंडीशन आपकी चलेगी, 0 में जो भी वैल्यू 0 होगी, 1 में 1 होगी, लाइक दैट. सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस कोड. तो अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, लेट्स सी वेदर वी आर गेटिंग एनी एरर और नॉट. So here, suppose, sorry, here I have used index, make it index. मैंने क्या किया है, open index. Right. Now let's see. हाँ, अभी आपका वर्क कर रहा है. So now it's working for both the test cases. So this is how basically you have to solve all these problems. The problems are quite simple. If you will see, if you'll try to solve all these problems are not that much complicated. I have seen like most of you have already solved the problems. Majority of the problems you have already solved. Okay. So second problem is again very simple. So those who are having any difficulty, they can feel free to ask if you are getting any error or any doubt related to that. Okay. Okay then.